75 years of India's independence, 73 years of Indian Constitution into enforcement, converting India from a dominion status to a fully republic and a fully sovereign country. 50 years of Keshwanand Bharati judgment. So 2023 has been a landmark year for all these reasons. This is a time where we should retrospect and introspect what this country has achieved over these many years. Starting from 1951, when the first time the lengthiest constitution of the world was amended through First Amendment Act 1951. The first time Indian Constitution was amended was in 1951, First Amendment Act. And the amendment was not in any ordinary provision of the Constitution. The amendment was in the pious fundamental rights. Fundamental rights were amended. That itself became a controversy. Many changes were brought. But was First Amendment Act 1951 done to serve any narrow political interest, or was it introduced for a larger social reform? Well, the answer is larger social reform, on which Parliament and Supreme Court both agreed. First Amendment Act 1951 introduced Article 15 Clause 4, which allowed the government to take so many steps for the upliftment of the backward classes. The First Amendment Act allowed government to provide various benefits to the backward classes, including reservation. If you see the genesis of reservation or the legitimization of reservation and many other benefits which are being given to the vulnerable sections, particularly the backward class, the support also comes through Article 15 Clause 4, which was introduced by First Amendment Act. First Amendment Act also introduced the 9th schedule in the Constitution of India. 9th schedule, very, very controversial and very, very required at that point of time. 9th schedule did prevent judicial review on certain laws which were added in the 9th schedule. But was the First Amendment Act done, again I repeat, was this First Amendment Act done to serve a narrow interest? Answer is again no. 9th schedule, yes, it prevented judicial review on certain laws, but the purpose was to convert India into a welfaric society, into a socialist state. 9th schedule also allowed various land reforms, particularly abolition of zamindari, from being struck down by the judiciary. And the purpose was to take care of the poorer section of the society also. The purpose was to ensure that landless are also not exterminated in this journey of independent India. And the purpose, to a large extent, was it achieved? The answer is yes, the answer is no. Yes, land reforms were brought and they were successful to a large extent. But answer is no also, because in spite of 9th schedule, in spite of many other constitutional provisions, poverty still exists. Income inequality has existed over these many years and has been increasing, not only between richest and the poorest, but also between male and female. So to some extent, we have achieved our goal of becoming a welfaric state, but still some steps we are away from becoming a complete Ram Rajya. A very interesting fact in this context is that even the constitution makers were quite aware Indian Constitution is having so many provisions which have to be protected at all cost. That is why they made many provisions of the Indian Constitution insulated from easy change. Many provisions of Indian Constitution were so designed that they could not be changed easily, thus giving an idea that Indian Constitution is rigid. For example, federalism. For example, separation of powers. For example, independence of judiciary. Various provisions dealing with them cannot be amended easily. They require the amendment of the Parliament with special majority and approval of minimum 50% states. So Indian Constitution was made rigid with a deliberate intent to preserve certain values of the Indian Constitution. But simultaneously, to support administrative convenience, certain provisions of the Indian Constitution could be amended with relative ease. That is why Indian Constitution is a beautiful blend of rigidity and flexibility.
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे रिजिड है, कहीं उसको अमेंड करना मुश्किल है और कहीं पे उसको अमेंड करना आसान है। कुछ प्रोविजन जिन्हें बचाना था अनड्यू चेंज से, उनको डिफिकल्ट बनाया गया अमेंडमेंट से। मगर चाकि एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे, कुछ प्रोविजन को अमेंड करना उतना मुश्किल नहीं है। इसको हम लिंक कर सकते हैं केशवानंद भारती जजमेंट से। केशवानंद भारती जजमेंट इज, यू कैन रिलेट दैट विद दिस ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। In Keshwanand Bharati judgment, Supreme Court said that Parliament can amend any part of the Constitution, but certain provisions cannot be amended because those provisions are the soul of Indian Constitution and they are soul of Indian Constitution for a purpose, together forming the basic structure of the Indian Constitution. So basic structure of the Indian Constitution through Keshwanand Bharati judgment was made super rigid. It cannot be disturbed even through Parliament's amendment, and that's something very appreciable. But now it is debated whether basic structure concept is right or wrong. But till now, what we've seen is that the idea of basic structure, which emerged through Keshwanand Bharati judgment 50 years back, has to a large extent saved this country from going the Pakistan's way. अगर आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से डिफरेंट है, तो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का रोल भी है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स स्टिल कंजर्व्ड बिकॉज फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इफ रिलीजियस माइनॉरिटीज आर टेकन केयर ऑफ, रीजन सेक्युलरिज्म इज डिक्लेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इफ people are still able to go to the court and challenge any parliament's action, then because judicial review is a part of basic structure. तो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर ने हमारे राइट्स को और गवर्नमेंट की अनलिमिटेड डिसीजन मेकिंग पावर को, दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस करा है, ताकि गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग पावर हमारे राइट्स को वायलेट ना कर सके, और एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस बना के चले हैं ताकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट बन जाए। अभी तक तो बेसिक स्ट्रक्चर ने अपने काम को बहुत अच्छे से अंजाम दिया है। कभी कभी पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में तनाव भी होता है, जैसे एनजेएसी को लेकर हमने देखा 99th अमेंडमेंट एक्ट विच इंट्रोड्यूस्ड एनजेएसी was struck down by the Supreme Court of India, saying that NJAC will hamper the independence of judiciary, and independence of judiciary is a part of basic structure of the Indian Constitution. But largely Parliament और judiciary ने मिलकर Constitution को इस तरह से यूज किया है, इस तरह से अप्लाई किया है कि आज इंडिया कुछ लीडिंग इकोनॉमीज में गिना जाता है। इंडिया की उन वैल्यूज को अप्रिशिएट किया जाता है वर्ल्ड वाइड जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से निकली है। अगर आज इंडिया एक मैसेंजर ऑफ पीस की तरह देखा जाता है, तो उसके पीछे भी कॉन्स्टिट्यूशन की काफी सारी वैल्यूज हैं जिन्हें प्रोटेक्ट किया गया है बेसिक स्ट्रक्चर के आइडिया के थ्रू। Point is that if basic structure is so relevant, if judiciary is so responsible, parliament is also so responsible, but why there are so much of problems in Indian society still after 75 years of independence? सवाल ये है कि अगर सिस्टम इतना बढ़िया है, कॉन्स्टिट्यूशन इतना बढ़िया है, जुडिशरी अपना काम अच्छे से कर रहा है, तो 75 साल बाद भी वो तकलीफें क्यों, जिनको हम आराम से इग्नोर नहीं कर सकते? इतनी गरीबी क्यों, इनइक्वालिटी क्यों, विमेन के अगेंस्ट इतना वायलेंस क्यों? रीजन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर नारायणन सेड दैट इट इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच हैज फेल्ड अस, इट इज वी हु फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान तो बहुत अच्छे से लिखा गया था, मगर जिस तरह उसको अप्लाई किया गया, शायद कहीं ना कहीं उसमें कुछ चूक हुई है। वुड्रो विल्सन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट रह चुके हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं, उन्होंने कहा था कि इट वॉज वेरी इजी टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन बट वेरी डिफिकल्ट टू रन इट। संविधान बनाना बहुत आसान है, मगर उसको चलाना, उसको इंप्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। इंडिया के कंटेक्स्ट में ये पर्टिकुलरली ट्रू है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लीगल डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ल्ड की सारी बढ़िया बढ़िया चीजें, वर्ल्ड की सारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेस्ट प्रोविजंस हैं, उनको मिलाकर एक बहुत अच्छा ब्लेंड बनाया गया है। फिर भी इतनी तकलीफें क्यों? तकलीफें इसलिए हैं क्योंकि सोसाइटी में करप्शन बहुत ज्यादा है, सोसाइटी बटी हुई है।
रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल माइंडसेट भी है जहां मेल विमेन के ऊपर डोमिनेट करना चाहता है वायलेंट तरीकों से भी। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, जब तक हमें करप्शन से दूरी बनाने की आदत नहीं पड़ेगी, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि वायलेंस अगेंस्ट विमेन इज वायलेंस अगेंस्ट आवर मदर, तब तक संविधान अकेला अपना पर्पस अचीव नहीं कर पाएगा। वी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया have now to introspect and come forward and think what we can contribute in making this country a welfare state. Just putting the responsibility on the government or the constitution will not serve the purpose. We have our responsibility and we have to be very responsible while we vote as a citizen of this country. Not only voting, but while fulfilling our fundamental duties, we have to be very, very responsible. We as a responsible society will give rise to a responsible government which can better implement this beautiful legal document called Constitution of India. And we expect that this, if applied on ground actually, in the coming 25 years, India will actually achieve राम राज्य। अगर हमने अपनी जिम्मेवारी को ठीक से पूरा किया, वोटिंग करते टाइम और उसके बाद भी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरा किया, तो आने वाले 25 साल में जरूर इंडिया राम राज्य स्थापित कर पाएगा और इंडिया एक वेलफेयर स्टेट की तरह जाना जाएगा और पूरे वर्ल्ड के लिए एक मिसाल बन जाएगा। थैंक यू सो मच। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।